Now, this is chapter number 12. We will discuss here nomenclature. We will discuss here nomenclature of substituted benzene compound. Nomenclature of substituted benzene compound. Now, for IUPAC, nomenclature of substituted benzene. For IUPAC, nomenclature of substituted benzene compound, the substituent is placed as prefix to word benzene as shown in following example. For IUPAC nomenclature of substituted benzene compound, the substituent is placed as prefix to the word benzene as shown in following example. Here example. However, common name written in bracket below of many substituted benzene compound are also universally here used. देखो जैसे बेंजीन पे CH3 है, इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है टॉल्विन. हियर वी कैन से दैट कॉमन नेम इज टॉल्विन. दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन, है ना, कॉमन नेम इज एनिसोल, and this one is amino benzene. Here aniline will be there. Similarly, here we can say that nitrobenzene and bromobenzene will come. In this situation, benzene is monosubstituted. In this situation, benzene is monosubstituted. तो मोनो मतलब सिंगल. यहाँ पे कितने हैं? देखो OMe, Me का मतलब होता है मिथाइल, Me का मतलब मिथाइल, Et हो तो इसको क्या बोलते हैं? इथाइल. क्लियर? So this is CH3, OMe, NH2 will be there, NO2 will be there, and Br will be there. Clear? Now, if benzene ring is disubstituted, the position of substituents is defined by numbering the carbon atom of the ring such that the substituents are located at the lowest number possible. है ना? If benzene ring is disubstituted, ऐसा मोनो था कि benzene ring is disubstituted, the position of substituents is defined by the numbering the carbon atom of the ring, clear, such that substituents are located at lowest number possible. जैसे अल्केन में नहीं था वैसे ही. The compound B here is named as 1,3-dibromobenzene, but not we can say it 1,5. देखिए यहाँ पे ये 1, 2, 3 है. क्लियर हुआ कि नहीं? ये नंबरिंग चलेगा, लेकिन आप यदि ऐसा करो सी 1, 2, 3, 4, 5, तो ब्लू वाला नहीं चलेगा. क्लियर? ग्रीन वाला इज बेटर वन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1,2-dibromobenzene. This is 1,3-dibromobenzene and this is 1,4-dibromobenzene. So this is IUPAC nomenclature. But see, in case of organic compound for dye substitution, here means what will happen? Here, see, we are writing common name. In common name, we have to specify ortho, then meta, and then after para. So we have to specify here means ortho, meta, and then after para. So this is second situation. So this will be again in second situation in case of benzene. Benzene मतलब monosubstituted, and then after we can say that disubstituted. In case of monosubstituted means another examples are also there. In case of monosubstituted, here with different type of examples are also we can say that there. Clear? Now ortho meta para, आपका जो ortho meta para है ना, here we can say that in trivial name system, here in trivial name system of naming we are using ortho meta para, clear, as prefix to indicate the relative position 1, 2, 1, 3 and 1, 4 respectively. Clear? So now suppose see this is disubstituted. Now what will happen in case of tri? अब तीसरा कंडीशन आता है tri और higher substituted benzene derivative. This is tri or higher substituted benzene derivative. So this prefix
cannot be used, and the compound are named by identifying substituent position on the ring by following the lowest locant rule. क्लियर? दैट नेमिंग का तो वही क्राइटेरिया है. नेमिंग मतलब तो नेमिंग विल स्टार्ट इन सच अ वे दैट कि कार्बन और बेंजीन रिंग रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप इट शुड कंसिस्ट लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. चलो यहाँ पे देखो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इसमें कैसा है क्लोरीन. अब हाउ वी कैन फाइंड आउट कि किसकी नंबरिंग पहली होगी. तो इन केस ऑफ प्रायोरिटी सीरीज यू नो क्लोरीन है ना, क्लोरीन इज मोर पावरफुल, दैट्स व्हाई क्लोरीन को 1 नंबर देंगे. तो हियर सी 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन. दिस इज 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन. तो दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. This will be again we can say the tri substituted compound. then ये वाला नंबरिंग नहीं चलेगा. कौन सा? here 4 chloro 1 3 dinitrobenzene, it is not suitable. clear? so when a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as a substituent instead of parent. clear? When a benzene ring is attached to an alkane with a functional group, it is considered as substituent. Here, substituent instead of parent. The name for benzene as substituent is phenyl, and here C6H5 will come, which is represented with the help of PH. Here हुआ कि नहीं? Here means phenyl will come. Now some other example of here higher substituted. देखो जैसे ये कंपाउंड है, तो दिस वन इज NO2 and this one is Cl and this is we can say it Cl. clear हुआ? here CH3 is there. so now numbering 1 2 3 and 4 will be there. clear हुआ कि नहीं? इसका नाम क्या आएगा? 2 chloro, this is 2 chloro, here 2 chloro 1 methyl, 2 chloro 1 methyl 4 nitrobenzene will come. 2 chloro 4 methyl है ना, 2 chloro 4 methyl and here we can say that nitrobenzene will come. suppose एक 1 2 3 4, यदि ग्रीन वाला करो तो ग्रीन वाले में क्या आएगा? 4 methyl here 4 methyl 2 chloro and then after here nitrobenzene, but this one is wrong, this is not suitable. clear? 4 methyl 2 chloro nitrobenzene, so this one is again we can say it not suitable here. Another example is C. ये सब क्या है? poly substituted. so another example is C. this one is OMe and then after Cl and then after CH3. देखिए 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 2 chloro, here name will be 2 chloro, this will be again we can say that 2 chloro and then after here 2 chloro 4 methyl, 2 chloro 4 methyl है, 2 नंबर पे Cl है, 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 chloro 4 methyl and see benzene is related with respect to OMe, इसको बोलते हैं anisole. if benzene is related with respect to OMe, so this is nothing but it is normally known as here anisole. similarly here NH2 then CH3 and then C2H5, here again 1 2 3 4. clear? तब क्या करने का? 4 इथाइल सी, जैसे नहीं था एलिफेटिक कंपाउंड वही, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल 4 ethyl 2 methyl and here we can say that aniline will be there. 4 ethyl 2 methyl, 4 ethyl क्यों बोलते हैं? क्योंकि ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E आता है, तो 4 ethyl 2 methyl and here we can say that aniline will be there. clear? उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज सी, ये
here OH, then after CH3, and then after CH3. 1, 2, 3, 4. So now we will write down here 3, 4, C. So this is 3, 4 dimethyl, है ना? And then after we can say that phenol is there. 3, 4, here we can say that dimethyl, phenol will be there. In this way nomenclature of benzene and benzene related compound can be done. In this way here we can say that nomenclature of benzene and benzene related compounds can be, we can say that done. तो सी यदि मैं ब्रीफ अप करूं, ठीक है, यदि मैं आपको ब्रीफ अप करूं तो ब्रीफ अप में कैसा होगा? इन केस ऑफ nomenclature of benzene, here 3 different type of groups are there. So A is monosubstituted, B is disubstituted, and C is again we can say that polysubstituted. Clear? In case of mono, here one functional group will come. In case of di, 2, and in case of poly, here we can say that 3 functional group will come. Here isomer is not possible, but in case of disubstituted, here isomer is possible, and this isomer is further divided into 2 parts, 1, 2, 1, 3 and 1, 4. So 1, 2 is known as ortho, 1, 3 is known as meta, and 1, 4 is known as para. See, in case of benzene, if we are writing common name, then we are writing here, we can say that ortho, meta, para. Otherwise, we are writing here, we can say that, see, 1, 2, 1, 3, 1, 4. तब देख, इसमें बेंजीन में भी जो नंबरिंग के रूल आते हैं ना, वो वही होंगे. ठीक नंबर वन तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ना, तो 6 ही होगा. क्लियर? नंबर 2, हियर वी कैन से दैट बॉन्ड, तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन इन केस ऑफ बेंजीन वो भी फिक्स है. नंबर 3, डिटरमाइन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप. एंड फोर्थ वन, numbering. So numbering will start in such a way that here means functional group, which is we can say that highly reactive in nature. It should consist least number of hydrocarbon chain. Least number of, here we can say that hydrocarbon chain. Least number of, here we can say that hydrocarbon chain is there. क्लियर हुआ कि नहीं? लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. अब देख उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फॉर दैट पर्पस यू हैव टू रिमेंबर प्रायोरिटी सीरीज ऑफ, यू कैन से दैट फंक्शनल ग्रुप. तो वो आपको करना है. ठीक है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आइसोमेरिज्म. नाउ वी विल डिस्कस हियर आइसोमेरिज्म. तो व्हाट इज आइसोमर? तो आइसोमर का मतलब होता है, सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास आर डिफरेंट. व्हाट इज आइसोमर? हियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास आर अगेन वी कैन से दैट डिफरेंट. जैसे टॉपिक नंबर 12.6 है, तो दिस इज आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म इज one type of process. Isomerism is one type of process with the help of which we can find out 2 or more than 2 structure from same molecular formula. Clear? And here whatever molecular formula we are taking, and from that we can find out different type of structure. So that different type of structure is normally known as isomer. So what is isomer? Here molecular formula is same, structural formula is different. Molecular formula is same and structural formula is again we can say that different. Clear? So now we will discuss here means isomerism. Isomerism is further divided into 2 parts. So one we can say that
structural, one we can say that structural isomerism, and second one is stereoisomerism. One we can say that structural isomerism and second one is stereoisomerism. In case of structural isomerism, chain isomerism will come, position isomerism will come, functional isomerism will come, then metamerism will come, and then after we can say that tautomerism. Clear? In case of structural isomerism, here two different type of things are there. And now stereoisomerism, here geometrical and then after optical. तो ज्योमेट्रिकल तो आपको हाइड्रोकार्बन में आएगा, ऑप्टिकल है ना आपको 12th में आएगा, 12th में. Clear? So now we will discuss one by one. Here see, in case of isomerism, first of all two parts are there, structural as well as we can say that stereo. In case of structural isomerism, chain will come, position will come, functional will come, metamerism, and then after tautomerism. Now one by one we will discuss here. जैसे देखो ये chain isomerism है, तो molecular formula is C5H12. Clear? में कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो देखो जैसे ये है H H H, ये क्लियर, ये इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस वन इज नोन एज नॉर्मल पेंटेन. चलो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, so this is we can say that isopentane, this one is isopentane, and similarly here neopentane will come. Here normal pentane, isopentane and neopentane will come. Now stability order, तो यहाँ पे stability order normal, iso, neo. Reason surface area, तो surface area of normal compound is maximum, surface area of normal compound is maximum. So this is complete information of chain isomerism. Clear? Now second one, देखो if molecular formula is given, then structural formula can be again means generated with the help of trial and error method. अब चलो ये पोजीशन आता है, सी पोजीशन आइसोमेरिज्म. देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बोला स्ट्रक्चर ए, तो ये आपका इथेनॉल है, सी, तो दिस इज स्ट्रक्चर ए है ना. यहाँ पे इथेनॉल नहीं, चलो ये आपका ये. अब हाउ मेनी कार्बन? 3 एंड हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं 1-प्रोपेनॉल. तो दिस इज वी कैन से दैट नोन एज 1-प्रोपेनॉल इज देयर. क्लियर? अब द वैसे बी, तो दिस वन इज 2-propanol. Now what is stability order? The stability of stability of B is more as compared to A. Reason? तो reason में याद रखने का, if any functional group related with respect to position 1, तो reactivity will be always more and stability will be less here. So this is complete information of position 1. Clear? अब आता है functional isomerism. Now we will discuss here functional isomerism. तो functional में क्या हो जाएगा? See, this one is functional isomerism. तो चलो this is A, तो ये आपका आया इथेनॉल, तो this one is ethanol and this one is dimethyl ether. इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल, और ये है डाइमिथाइल ईथर. क्लियर? यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर. चलो C2H6O, ये फॉर्मूला कौन सा है? तो दिस इज अल्कोहल, और ये क्या है?
R is there. Functional isomerism. So this is complete information of functional isomerism, है ना. फिर आता है मेटामेरिज्म. तो व्हाट इज मेटामेरिज्म? फॉर स्टेबिलाइजेशन पर्पस, सी इन केस ऑफ मेटामेरिज्म, फॉर स्टेबिलाइजेशन पर्पस हियर पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप विल चेंजेस. क्लियर? जैसे देखो ये CH3 है, CH2, CH3, ये A, और यहाँ क्या है, CH3 है, O, CH2, CH3. देखो यहाँ पे दोनों साइड पे 2 कार्बन है, यहाँ पे एक साइड पे 1 और एक साइड पे 3. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इधर क्या आ जाएगा, C4H10O. क्लियर? See, if molecular formula will be C4H10O, here means 2 structure will come, A as well as we can say that B is here. So this is we can say that metamerism. अब देखो टोटोमेरिज्म कोर्स में नहीं किया है, बस आपको याद रखने का. टोटोमेरिज्म फॉर स्टेबिलाइजेशन पर्पस, here for stabilization purpose position of hydrogen will changes. For stabilization purpose, here we can say that position of hydrogen will changes. Now topic number 12.6.2 is stereo. Here stereo isomerism. इसका डेफिनेशन क्या है? स्टीरियो मतलब रोटेशन. स्टीरियो मतलब रोटेशन. तो दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस with the help of which we can convert any 3-dimensional structure into 2-dimension without changing its meaning. This is we can say that branch of science, in which we can say that we can convert any 3-dimensional structure into 2-dimension without changing its meaning. The stereoisomerism is further divided into 2 parts. One is geometrical and second one is optical one. One is geometrical. अब ये geometrical है, ये हाइड्रोकार्बन में आएगा. वैसे यहाँ पे एक आता है सिस और दूसरा आता है ट्रांस, और सब आपको हाइड्रोकार्बन बताएंगे. क्लियर? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अप टू 12.6.2. करेक्ट?